we can get to know about new people? Well, there are abundance of places where one person can make new comrades. I would like to describe it with the according to the generation wise. If I talk about the children, then there are numerous schools as well as the institutes are available where they can make the new friends. Apart from this, if I talking about the working generation, then they can make new friends in their surroundings, in their working surroundings, as well as the elder generation can make the new friends by going to the parks as well as the other public places. ओके ठीक है बढ़िया एक बार फिर स्पीक करो थोड़ा लाउड बोलो सारे लाउड बोलना वेयर एंड हाउ कैन people get to know about new people? Well, there are abundance of places where people can make new friends. I would like to describe it according to the generation wise. If I talk about the children, then there are ample of schools and institutes are available where they can make the new comrades. Apart from this, if I talk about the working generation, then they can make the friends as well as they can make the friends by uh, working in a diversified surroundings. And the if I talk about the elder generation, then they can make the friends by going to the parks as well as the Okay, public चलो बढ़िया places. सीगा क्वेश्चन का where and how we can get to know about new people. Well, there are many ways that we can get to know about new people. First, I would speak about the web. Like nowadays, internet is one of the best platform where we can meet the new people. Like on the social app, on the Instagram, Facebook, people can make IDs and they can social with the other people. Apart from that, we can also get to know about new people in the weddings and other family events. More importantly, while shopping, like when people go to market, then they meet the new people. Apart from that, I would also speak about traveling. During traveling, people get to know about others people traditional culture and they become very good friends. So these are things. So बढ़िया इसका answer. Okay, next question है you. First you. Do you think that clothing can tell us much about a person? Well, sometimes if there are many people who are influenced by the clothing. If I talk about the one person who is wealthy and he wearing just a simple clothes, then they cannot tell the person. So I can say that the clothing cannot. Tell the personality of people because there are also some people who wear the fashionable clothes but they are not wealthy. ठीक है थोड़ा स्टेबल होके बोलो ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਮੇਨ ਹੈ क्या ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ तो थोड़ा ਇਹਨੂੰ स्टेबल होके बोलो दोबारा फिर स्पीक करो डू यू थिंक दैट क्लोथिंग कैन टेल अस मच अबाउट ए पर्सन Uh, I can say no because clothing is not play a pivotal role to influence the any personality because there are many person who are really wealthy but wear the simple clothes. So I can say that the clothing the dining are not show the personal personality. On the other hand, there are some people who are very fashionable and wear fashionable clothes, but they are not much wealthy. So I can say that ओके चलो ठीक है स्टेबिलिटी थोड़ी कमी है थोड़ा बीच भी हैगा ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥੋੜਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਕਲੋਥਿੰਗ ਕੈਨ ਟੈਲ ਅਸ ਮਚ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪਰਸਨ I would say that yes, clothing sense can tell much about the personality of a person. For example, if I would say the person who is wealthy as well rich, he will prefer to buy a trending clothes with respect to a high quality clothes. So a person can classify him or her as a wealthy person. On the other side, if a poorest person he wear a local buying clothes, so we can classify himself as a middle class or a low class family. ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ तो ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹੇਗਾ ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕੈਨ ਕਲੋਥਿੰਗ ਟੈਲ ਅਸ ਮਚ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪਰਸਨ तो अगर मैं ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ नो आई डोंट थिंक सो क्लोथिंग कैन टेल अस much about a person as nowadays there are numerous people who wear very nice clothes but their character is so bad for instance जो तो part 3 क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ एग्जांपल दे सकते हैं for instance I would speak about the leaders most of the politicians they wear the white clothes but they are corrupt so I can say spending quality of time with someone can tell us much about a person instead of judging from clothes we can spend quality of time with the person and we can really get to know whether the person is good or not ਵੈਸੇ तो मेन ਆਪਾਂ मैं ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਡਬਲ ਫੇਜ਼ ਹੈ तो ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੇ ਲਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ
ਐਂਡ ਸਸਤੇ ਲਿਬਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਲੋਕੀ ਲਿਖੇ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਦਤਾਂ ਉਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਯੂ थोड़ा लाउड बोलना। हाउ डज सोसाइटी इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी? Well, there are many types of ways a society influences the person behavior, such as if a society tell us about the individuals like they wear good clothes. That's why they show that the society are the people who are belong to the society is good. Apart from this, if the people do not wear good clothes that time, they show that the society are not good. ओके, ठीक है। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਊਡਨੈਸ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਲਾਊਡ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਨਸਰ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਨਸਰ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਨਸਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਓਕੇ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਊ ਡਸ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਭ, क्योंकि क्वेश्चन पार्ट 3 क्वेश्चन है, थोड़ा रूम लवो। ये नहीं कि जिद्दां गल क्वेश्चन का खत्म होया नाल ही स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बाकी दिमागी क्वेश्चन सीगा, थोड़ा टाइम लवो समझण लई कि क्वेश्चन सीगा क्या, ठीक है ना। तो जो तुसीं बोलिया भी मैंने लग्या कि तुहानूं क्वेश्चन समझ लग्या कि क्वेश्चन सीगा क्या, पर तुसीं फटाफट स्टार्ट करता। तो इतों तो बैटर है तुसीं पहले क्वेश्चन चंगी तरह समझो फिर उसका आंसर स्टार्ट करो, ठीक है। सेम क्वेश्चन यू, हाउ डज सोसाइटी इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी? Well, there are multiple ways are available in which society influence the people with the help of education. There are so many people encourage to poor person with the help of other people. There are so many poor person well known in all over the world. There are so many sportsmen and so many celebrities are available in my country. With the help of society, they are become successful. ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਰੂਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਟਫ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਨਸਰ। ਚਲੋ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹੈ, तो अगर तुम क्वेश्चन बोल दोगे तो बैठ देगा। चुप रहना बेटर है। अगर तो लगे कि ये आंसर हो सकता तो उन्हें स्पीक करो, समझे। चलो उधर क्वेश्चन पहले समझो। अगर तुम क्वेश्चन समझने च प्रॉब्लम है तो तोड़ के क्वेश्चन समझो, समझे। स्पीकिंग का रूल यही है कि पहले एन दिमाग खोल के क्वेश्चन समझना। तो क्वेश्चन क्या सीगा, हाउ डज सोसाइटी इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी। कहते सोसाइटी बंदे की पर्सनैलिटी नूं किदां इन्फ्लुएंस करती है। मतलब जो भी मैं अज हैगा ਇਹਦਾ सोसाइटी मतलब सोसाइटी करके कि मेरे ਜਿਹੜਾ मेरा करैक्टर उत्ते कोई प्रभाव पिया, जो मेरा जो भी मैं सोचदा, जो भी मेरे जीवन है, ठीक है ना, कि ਇਹਦਾ सोसाइटी ਦਾ मेरे जीवन ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ। तो उन्होंने क्या बंदे की पर्सनैलिटी में सोसाइटी किदा अफेक्ट करती है, ठीक है ना। तो बंदे की मतलब पर्सनैलिटी सोसाइटी करके देखो ना, जो मेरी अज पर्सनैलिटी है, ठीक है ना, अगर माँ प्यो बाहर कढ़ दी है, ठीक है ना, तो सोसाइटी में अगर आप टीचर भी गिनीए, ठीक है ना, तो टीचर ने मेरी पर्सनैलिटी चेंज किया कि नहीं किया। मेरे फ्रेंड्स उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी चेंज किया कि नहीं। सोसाइटी ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। तो उन्होंने क्या सोसाइटी साडी पहले क्वेश्चन समझो, ठीक है ना। जिद्दां इन्हां नाल ही आंसर स्टार्ट करता सी, मैंने लगे कि दिमाग किसदा इन्ना तेज होगा ਜਿਹੜਾ फटाफट इन्ना जल्दी समझ लेगा क्वेश्चन क्या सीगा। अच्छा थोड़ा रूल लो एक सेकंड का, ठीक है ना। पहले समझो क्वेश्चन है क्या, फिर बढ़िया तरह सोचो। तो क्वेश्चन बचा वाला सीगा, हाउ डज सोसाइटी इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी। Well, as far as I'm concerned, society influence personal personality to much extent. Like first I would speak about friends. If we have the question को अपन example दे के present कर सकते हैं। First I would speak about friends. Like if we have good friends who are so intelligent, it impacts us very much, and we also work hard. And apart from that, if we have the wise friends who love study, it also motivates us, and we also work hard. Apart from that, I would speak about our relatives. Like if our relatives are rich, they are working hard, they have luxurious cars, house, it also influences us, and we also try to imitate, we also work hard. So society influence our character and personality very much. understand easy question। तो जो मैं क्या कुछ भी क्या सेम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ओपरा या फ्रॉम क्वेश्चन बोल के फिर बोलने लगते हैं,
समझ रहे? तो जिंदर तक जो सुनना चाहता ਤੁਸੀਂ नहीं सुनाओगे तो एग्जामिनर ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ नहीं होएगा। तो ट्राई करो कि पहला क्वेश्चन ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। समझ रहे? ये क्वेश्चन ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਵਰਡ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ 7। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਪੀਡੀਐਫ ਦਾ ਕੀਵਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਐਂਡ ਕੀਵਰਡ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਫੋਰਨਰ ਹੂ ਸਪੀਕਸ ਯੂਰ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ हिंदी एज वेल। तो कहता कोई भी फॉरनर जो थोड़ी नेटिव लैंग्वेज स्पीक करता होगा तो पार्ट के क्वेश्चन रिलेटेड टू लैंग्वेज आप डील करें। पहला क्वेश्चन थोड़ा ओके व्हाट फॉरेन लैंग्वेजेस डू इंडियन चिल्ड्रन लर्न? Well, there are many languages. लाउड बोलना बच्चे। व्हाट फॉरेन लैंग्वेजेस डू इंडियन चिल्ड्रन लर्न? Well, there are many languages which Indian people adore to learn. First of all, I talk about English. Nowadays, many people who adore to learn English because English play most indispensable role in everyone's life because nowadays many webs which are available in English. So it is very good for children to learn English. Apart from that, people prefer to learn French and many more languages. ओके चलो ठीक है। लाउड बोलना ठीक है ना। अगर लाउड बोलोगे तो भी कॉन्फिडेंस फील होएगा, एग्जामिनर ते भी एक बढ़िया इंपैक्ट रहेगा। तो ट्राई करना लाउड बोलना। सेम क्वेश्चन व्हाट फॉरेन लैंग्वेजेस डू इंडियन चिल्ड्रन लर्न? Well, there are the plethora of language. There are the plethora of language which are preferred by the student. Most of the students prefer to learn the English language because most of the countries people used English for communications. Apart from that, students also prefer to learn Spanish, French, and some of few. ओके चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिंपल से क्वेश्चन का व्हाट फॉरेन लैंग्वेज डू इंडियन चिल्ड्रन लर्न? वेल इंडियन चिल्ड्रन लर्न मैनी लैंग्वेज। फर्स्ट आई वुड स्पीक अबाउट इंग्लिश। This is the most popular language that is often learned by Indian children, as English has become the worldwide language. It is being spoken the countries world over. So most of the English children prefer to learn English language. More importantly, apart from that, some of the majority of the Indian children also prefer to learn Spanish, German, और कुछ भी कह सकते हैं। सब language नाम पूछे सीगे। Next question है ਤੁਹਾਡਾ why do Indian children learn English language? You बच्चे why do Indian children learn English language? Well, there are multiple reasons of learning English language. Firstly, the job opportunity. If person can learn English in a great way, then he or she will able to earn high amount of salary. Apart from this, if a person have that knowledge about English, then he will not face any kind of problem in talking with the foreigners, and it is very conducive for all the people to learn English language. ओके ठीक है। थोड़ा लाउड बोलो। थोड़ा लाउड बोलो में बार है ना कि पोटेंशियली थोड़ी आवाज अगर करंट होएगा तो एग्जाम में तो इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो जितना बोला थोड़ा लाउड बोलना। सेम क्वेश्चन व्हाई डू इंडियन चिल्ड्रन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज? So there are numerous reasons why Indian children prefer to learn English language. Firstly, I would like to talk about as it is a way of communication. Majority of the Indians learn English so they can communicate with foreigners and learn about their traditions and cultures. Apart from this, nowadays English is also considered as a formal language as a job opportunity. So individuals can get a good opportunity by using it. ओके चलो बढ़िया सीगा। ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਸੇਮ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। क्वेश्चन ਸੀਗਾ why do Indian children learn English language? Well, there are multiple reasons that Indian people learn English language. First reason is that Indian English today has become the world language. It is being spoken the countries all countries the world over. Apart from that, nowadays most of the Indian people, अगर children की गल करें तो children कह सकते हैं most of the Indian people intend to migrate other nation where English is the eminent language. Even nowadays, most of the studies like physics, mathematics, everything now most of the books are in English language. So Indian children prefer to learn English. इधर कुछ भी कह सकते हैं। Next question है okay your question. Do you think that the way people learn English language is same as in the past? Well, no, I don't think the learn of the English language is the same because if I talk about the past, the technology is not advanced, but nowadays the technology is more advanced and many apps are available which the help of people can learn English. Apart from this, people can use the online method and they can start social app to make new friends in foreign
country. With the help of it, they can learn English language. ਓਕੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨ ਪਾਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਡਵਾਂਸ ਟੂ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ for you. Why do so many no do you think that the way people learn the English is the same as in the past? Definitely no. I do not support this nation, because in the past they give little importance to this language. With respect to this, that there was no advancement of technology through which a person can be able to contribute the best to learn the English language. But nowadays there are many institutions to be opened to help that is conducive to learn this language. With respect to this, many online applications has been also developed. ਓਕੇ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦ ਵੇ ਪੀਪਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਸਪੀਕਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਮਿੰਟ ਪੱਕੇ ਹੈ तो ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਪੀਕ ਕਰਦੇ हैं क्यों आवाज़ च क्लैरिटी है, आवाज़ च कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। तो मतलब अगर थोड़ी आवाज़ क्लैरिटी होएगी, कॉन्फिडेंस होएगा तो दोनों पक्के बैठ देगा। चलो सिंपल क्वेश्चन सीगा, डू यू थिंक द वे पीपल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज टुडे द सेम एज इन द पास्ट? No, I don't think so. The way people learn English language the same as compared to past. Like in past, the eminent way, the main way was to just teach in the classes. And teachers used to teach to the student using books, but nowadays technology is so advanced, students are learning the English language by many apps. Even nowadays YouTube is one of the best apps where students can watch videos, they can watch some podcast videos and they can improve the English language. इससे कुछ भी कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट एक क्वेश्चन डील करते हैं अपन, सेम क्वेश्चन है पर रह देने, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट फॉर पीपल्स लर्निंग। तो उन्हें क्या पीपल्स दी लर्निंग विच इंटरनेट का क्या बेनिफिट है? तुम कहोगे हाँ भाई इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। आजकल यूट्यूब पे लोग वीडियो देख सकते हैं लर्निंग विच, कोई भी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो कोई भी कॉन्सेप्ट अपन क्लियर कर सकते हैं। चलो लास्ट एक दो क्वेश्चन करते हैं अपन, सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, describe a person who always has an interesting ideas and opinion। मगर पीडीएफ क्वेश्चन नंबर 9। तो पार्ट 3 क्वेश्चन रिलेटेड टू ओपिनियन डील कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यू कैन यू आंसर when do you think children start to have their own opinion? When do you think children start to have their own opinion? Well, according to me, when the students start learning in a school, they started their own opinion to how to study and how to improve their skills, like how to speak in front of others. That then they take their own opinion. Okay, they start making their own opinion. चलो बढ़िया सीगा, बहुत बढ़िया करो ना। Same question, when do you think children start to have when do you think children start to have their own opinion? Well, I think the children start to give their opinion in the age of 18, because I can understand in the age of 18 the children are much mature rather than other ages. So I can say that in the age of 18 the children can start their opinion. ठीक है, इन्हें स्टेबल करो, ठीक है ना, थोड़ा स्लो करके इन्हें स्टेबल जाया करो। स्टेबल मतलब स्टेबल बोलने से क्या करें, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਤੇਜ਼ ਬੋਲੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो ट्राई करना थोड़ा स्टेबल होकर बोलना। आंसर नहीं तो क्वेश्चन क्या, कंटेंट और बढ़िया सोचो, अपने आंसर थोड़ा एक्सटेंड करो। क्वेश्चन से when do you think children start to have their own opinion? I think that the children start to have their own opinion when they are at the teenage age, like at the age of 12 to 13 children start to have their own opinion, because at this age the parents give full freedom to the children, and even at this age the children have the more exposure. Like at the teenage age the children are full of energy, even they start making new friends and it leads to more exposure, so they start to make their own opinion at the teenage age। तो जे तुसीं ऐन सोच विचार के बोलोगे एंड दिमाग खोल के बोलोगे उन्हां दा फायदा होगा, ठीक है ना। चलो तो मेन गल हैगी, घर जाके प्रैक्टिस करो 1 घंटा, ठीक है, स्पीक करो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ठीक है, क्वेश्चन बोलो, उन्होंने रिकॉर्ड करो आंसर ਨੂੰ, फिर सुनो, अपने आप ਨੂੰ खुद ਨੂੰ बैंड दो। एक मैं बार बार कहना, ਜਿਹੜੇ बैंड है वो वे ऑफ स्पीकिंग मिलने, अगर ਤੁਹਾਡਾ वे ऑफ स्पीकिंग ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ एंड स्टेबल ਹੋਏਗਾ एंड ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ हैं, ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ हैं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ फायदा होगा। थैंक यू।